Okay, so here you see, we have seen the sequence that how the chapter is moving in a progressive way. एक chapter के बाद दूसरा chapter कैसे related है? We have seen all these things. So now let's move to electromagnetic wave. So this is having basically three words: electromagnetic wave. So let's talk about wave first of all. What is a wave? Wave का मतलब क्या है? Wave means basically a pattern of disturbance. मुझे एक बात बताओ, how many of you have thrown a stone onto the still water? Just raise your hand. पानी शांत है, कुएं में हो या फिर लाइक पॉन्ड में हो, पानी शांत है, हवा नहीं चल रहा है, और पत्थर एक फेंक के देखियो. No one has. Okay, 1%, 2%. Okay, so 5% has thrown it. So you must have experienced. बाकी लोग भी जब देखे होंगे तो देखे होंगे at least in movie that whenever you are throwing a stone, initially basically the water surface was like this, still plain है. The moment you threw a stone and the stone fell at this point, इस point में जब गिरता है, then we see ripples. Ripples कैसा रहता है? ऐसा रहता है, sinusoidal ripples. Yes or no? Sinusoidal ripples. So इस ripples का कुछ points रहता है. We can note down some points about these ripples. Firstly, if you carefully observe, then water particle doesn't move. देखो, डिस्टर्बेंस इधर से इधर जाता है लेकिन वाटर पार्टिकल नहीं जाता. हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर पार्टिकल नहीं जा रहा है? एक छोटा सा पत्ता लेके या फिर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट व्हिच कैन फ्लोट ऑन द वाटर, इसके ऊपर में रख दो, यहाँ पे रख देना. देखना वो जो whatever particle you are keeping on this one, it is suspending on the surface, so it will be oscillating about this point and this point, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा. And from there we can conclude that water is not moving. If the water would have moving, then this leaf would have moved in this direction. So what we can conclude from here is that water particles are oscillating about in the vertical direction, whereas this disturbance is moving in the horizontal direction. This disturbance is moving. Disturbance is moving. What does that mean? The disturbance is having a velocity. और कुछ टाइम के बाद में देखना, यहाँ पे भी जो पार्टिकल है, it also started oscillating, vibrating about the vertical direction. ये वाइब्रेट करने लगा, ये मोशन में आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया. वेलोसिटी आ गया क्या मतलब है? It gained a energy, a kinetic energy, right? So ये energy आ रहा है. What does that means? That means we can say that energy is being transferred, whereas particles are not being transferred. पार्टिकल कभी भी ट्रांसफर नहीं हो रहे, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट. एंड द वे ऑफ पैटर्न, द बेसिकली this pattern of disturbance which we are getting, this pattern of disturbance is called as wave. This pattern of disturbance is called as wave, right? And here you can see that water particles are oscillating. किस डायरेक्शन में water particles oscillate कर रहे हैं? Here you see disturbance is moving in this direction, whereas water particles, they are oscillating about this direction, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, in this direction, vertical direction, perpendicular to the motion, right? Perpendicular to the motion, they are oscillating, right? So this is one type of wave, and several other type of waves are there. For example, sound wave. So जिस केस में इस तरह से disturbance, इस तरह से particles oscillate करते हैं, that means wave motion direction, the direction of wave is in this direction and particles are oscillating in the perpendicular direction, they are called as transverse wave. They are called as transverse wave, जो कि हम पानी में देखते हैं. पानी के केस में the water ripples, they, in that case the water particles, they are basically vibrating in the perpendicular direction, whereas there are several waves are there in which the particles, they vibrate along the direction of motion. मतलब the motion of the electromagnetic, the motion of the wave is in this direction, then the particles, this particle will oscillate in this direction. Such type of wave is called as longitudinal wave. So if the particles are vibrating in perpendicular direction to the motion, this wave called transverse wave. If the particles, they are vibrating along the direction of motion, this type of waves are called as longitudinal wave. For example, sound wave. Sound wave is a longitudinal wave, right? So this is what is wave. We can see it, right? So overall, we can say that there is no motion of the particles or no motion of the intermediate objects, but the energy is being transferred.
such type of phenomenon is called as wave. It is basically a pattern, right? Secondly, देखो कोई भी पॉइंट में whatever displacement has happened, ये पार्टिकल का बात करो, इस पॉइंट में ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. So whatever displacement has happened, the displacement depends upon two things. क्या क्या चीजें हैं? देखो ये पॉइंट में जितना डिस्टर्बेंस है, ये पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कम है. Displacement depends upon the position. So if we are changing the position, the displacement will change. Not only that, अभी अगर हम एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, नेक्स्ट सेकंड में शायद डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाए, नेक्स्ट सेकंड में शायद डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाए, सो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग. So therefore the particle motion or the displacement of the particle, it depends upon time and position both. कौन सा पोजीशन का बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल इसी इंस्टेंट में मैंने फोटोग्राफ लिया, that the ripple is shown to be like this. नेक्स्ट इंस्टेंट में मैं फोटोग्राफ लूंगा तो रिपल शायद ऐसा दिखेगा. ये समझो. सो इस पॉइंट में पार्टिकल जो ऊपर में था वो नीचे आ गया है. ये समझो. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेव मोशन, राइट? सो वेव में जो डिस्प्लेसमेंट रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड पोजीशन बोथ. कौन सा पोजीशन की बात कर रहे हैं? इस पोजीशन की बात करें या इस पोजीशन की बात करें या इस पोजीशन की बात करें? मिडिल पोजीशन, दैट मींस इट इज हैविंग द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये वाला पोजीशन तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कम है water ripples में, right? So in such kind of motion, in case of wave motion, we can see some characteristics of wave. So you can write it down, some characteristics. The very first characteristics is amplitude. So what is the amplitude of the wave? The amplitude of the wave is the maximum displacement happening, or the maximum displacement of the particle is called as amplitude. For example, इस केस में देखो maximum displacement कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है. This is called as amplitude. ये नॉट बोर्ड में represent करते हैं. So this is basically A naught. And what is amplitude? It is the maximum displacement. Right now, whatever I am teaching you, it is in the 11th syllabus. So अभी मैं बता दे रहा हूँ so that you won't face any problem in the upcoming section, right? Next one, you see one particle is oscillating. Oscillating का क्या मतलब है? जीरो से होके मैक्सिमम में जा रहा है, मैक्सिमम से होके जीरो में आ रहा है, जीरो से होके मिनिमम में आ रहा है, मिनिमम से होके फिर से जीरो में आ रहा है. So that means it is following a cycle. जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मिनिमम, मिनिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मिनिमम, मिनिमम से जीरो. So that means it is following a cycle. और साइकिल में हमारा एक टाइम पीरियड रहता है. ये समझो. So the time required for one cycle is called as time period. So therefore here the second term which is coming is time period. Time period. It is denoted with capital T. What is time period? Write it down. Time required for one cycle of oscillation. Time required for one cycle of oscillation. This is called as time period. Third, frequency. In several places it is represented with F. In certain places it is represented with nu. देखो ये भी नहीं है, ये nu है. Nu मतलब ऐसा करके एक छोटा सा ऐसा हल्का गया है. It is a Latin letter. Nu, N-U, nu. So frequency. What is frequency? Write down frequency. It is the number of cycle of oscillation in 1 second. Oscillation मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? Oscillation means जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मिनिमम, मिनिमम से जीरो. फॉर एग्जांपल हमारा ये रहता है ना, जो खेलते हैं बच्चे, स्विंग जो करते रहते हैं, यहाँ से जाएंगे मैक्सिमम में, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके रहना को. This is called as oscillation. This phenomenon is called as oscillation. Similarly, particle is oscillating here. Minimum से zero, zero से minimum, minimum से, it is like that. So frequency is number of cycles of oscillation per second. This is called, and by formula we can write it down that frequency F, or you can write it as nu as well. This will be equal to 1 by time period T. And what is the unit of frequency? Unit of frequency is hertz. इसको हर्ट्ज भी क्यों बोला जाता है, इसी चैप्टर में ही तुम्हें पता चल जाएगा. Why it is called as hertz. Next,
Next is called as angular frequency. Angular frequency. What is angular frequency? It is denoted with omega. You see, this is not W, it is omega, a Latin letter. ऐसे करके लिख लेना. So this is called as omega. Now, what is omega? Omega का formula क्या रहता है? Omega का formula रहता है 2 pi divided by t. 2 pi divided by t. That is basically angular velocity. It is also called as angular frequency. Next, fifth one. It is the wavelength. 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 What is wavelength? It is denoted with lambda. Lambda. So what is wavelength? Wavelength मतलब देखो, ये वेव में दो पिक के बीच में क्या डिस्टेंस है? That is called as wavelength lambda. या फिर दो ट्रॉ के बीच में क्या डिस्टेंस है? That is called as wavelength lambda. या फिर ये 0 0 के बीच में क्या डिस्टेंस है? That is called as wavelength. That means the distance covered in one cycle. The distance covered in one cycle by the wave is called as wavelength. Wavelength lambda. Next. Propagation constant. There is a constant that is called as propagation constant. You see, in case of wave, it is called as propagation. It is denoted with small k. In case of wave, it is called as propagation. The reason is that wave में कोई भी particle move नहीं कर रहा है. That is why it is not called as motion. Rather it is called as propagation. So, what is propagation constant? इसका directly value लिख लो, क्योंकि एक और बात पूरी तरह से समझाना मुश्किल हो जाएगा. It is equals to 2 pi divided by lambda. K is equals to 2 pi divided by lambda. Seventh, velocity of the wave. Velocity. It is denoted with v. You see, this one is v and frequency is nu. Frequency is nu. So don't get confused between them. This is the English alphabet v. Now, what is the v? We know that basically wave is propagating. That means it is moving. It is moving in our normal language. So that means इसका कुछ एक velocity रहेगा ना. So that is called as velocity v. अच्छा, velocity का formula क्या हो जाएगा? This is equals to distance by time. चलो एक साइकिल ले लेते. एक साइकिल में वेव कितना डिस्टेंस जा रहा है? एक साइकिल में वेव जा रहा है डिस्टेंस that is lambda. ये समझो, lambda wavelength. कितना टाइम लग रहा है उसको? टाइम पीरियड t. एक साइकिल में डिस्टेंस is equals to lambda divided by time is equals to t. So this will be the velocity. 1 by t is equals to frequency रहता है. So that is, this is also written as lambda into f. Because 1 by t is equals to frequency. या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है lambda into nu. इसी तरह से भी लिखा गया हुआ कहीं पे देखोगे. Right? Now here we know that velocity is equals to lambda divided by t. अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में 2 pi मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 pi डिवाइड कर देता हूँ. Is there any problem? No, 2 pi are getting cancelled. Now you see, this can also be rearranged as 2 pi by t divided by lambda divided by 2 pi. Sorry, lambda divided by 2 pi. No, sorry, 2 pi by t divided by 2 pi by lambda. So this can also be written as 2 pi by t divided by 2 pi divided by lambda. Can someone tell me what is 2 pi by t? 2 pi by t का फॉर्मूला क्या रहता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Yes, ओमेगा. 2 pi by lambda क्या रहता है? ऊपर में लिखा हुआ है propagation constant. Okay, so therefore it is also having the formula that this is equals to omega divided by k. So just unbox this formula. Important. Velocity. Now here you see, let's talk about equation. 8th point is equation of the wave. Now whenever we are talking about equation, मतलब वो particle का कोई भी point में particle का position कैसा है, उसका displacement कैसा है. So using displacement we can get everything. So therefore displacement depends on displacement of particle depends on
two things. क्या क्या? Position and time. Position and time. For example, here you see. सेम टाइम पे मैं दो पोजीशन लेता हूँ, एक पोजीशन ये लेता हूँ, एक पोजीशन ये लेता हूँ. ये जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना है. Whereas regarding the point 2, it is having a displacement in the negative direction. So that means it is having the more value. So therefore, displacement varies with position to position. Similarly, time to time, अगर हम एक सेकंड में हम बात करेंगे इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है इतना है, तो फिर नेक्स्ट सेकंड में वेव आगे भाग गया होगा ना. सो देयरफॉर उसका वेव का ऐसा हुआ होगा स्ट्रक्चर. So then the displacement will be at this point. So therefore, displacement changes with position, displacement changes with time. So therefore, the wave equation, the relation between displacement, time and position is given as wave equation. और wave equation का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसमें हम लिख सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है y, that will be equals to the maximum amplitude or the amplitude a naught into a sine term, sinusoidal term, because it is oscillating ना. So उसके वजह से हम एक sinusoidal term multiply कर देंगे. a naught into sine of, इसका फॉर्मूला रह जाता है kx minus omega t. This is a general formula which you can memorize, and this will be helpful for us in case of electromagnetic wave as well. And this is called as wave equation. Wave equation. It is having many forms. बहुत सारा फॉर्म रहता है. यहाँ पे k का वैल्यू तुम 2 pi by lambda पुट कर लो और इसका वैल्यू 2 pi by t पुट कर लो and take 2 pi as common. You are getting another equation. Yes or no? Velocity को यूज करके एक और इक्वेशन आ सकता है. So different forms of equations are there, right? So but you can calculate the equation if the data are given, if the informations are given, you can calculate them. So this is all about the wave. Wave का मतलब सबको समझ में आया? It is basically a pattern. और उस पैटर्न में कुछ एक एम्पलीट्यूड रहता है, कुछ एक टाइम पीरियड रहता है, कुछ एक वेवलेंथ रहता है, उसका कुछ इक्वेशन बनता है, उसका कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहता है, उसका कुछ टाइम पीरियड रहता है, उसका कुछ प्रोपगेशन कांस्टेंट रहता है. सो ऑल ऑफ देम आर देयर टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वेव इज दैट वन. किस टाइप का वेव है वो बताने के लिए हम ये सब कुछ देखते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव. नाउ व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? चलो हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चलते हैं. सो अभी तक जो था वो 11th का कांसेप्ट था. सो नाउ आई एम मूविंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो राइट इट डाउन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो नाम से क्या पता चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हो सकता है? It will be having some electric effect or electric characteristics, and same time it is having some magnetic properties or something like that. In reality, electromagnetic wave is a wave in which electric field is there and magnetic field is there. In our normal wave, you see in this case the water particles are oscillating. Water particles are oscillating, 0 से maximum, maximum से 0, 0 से minimum, minimum से 0. In case of electromagnetic wave, electric field is oscillating. 0 से maximum electric field से 0, 0 से minimum electric field से 0. Not only electric field, also the magnetic field is also oscillating. 0 से maximum magnetic field, maximum से 0 magnetic field, 0 से minimum magnetic field, minimum से again 0 magnetic field. So therefore, both electric field and magnetic field, both are oscillating, and because of their oscillation, energy is being transferred from one place to other place. So such type of wave is called as electromagnetic wave, right? Now a question is coming that ठीक है, electric field और magnetic field oscillate कर रहे हैं and wave एक direction में move कर रहा है. Then electric field, magnetic field किस direction में oscillate कर रहे हैं? For example, we are having two types of waves now. In one type of wave, the particles are oscillating perpendicular to the direction of propagation, and in other type of wave, the particles are oscillating parallel to the direction of propagation. So the perpendicular direction में जो oscillate करते हैं, that is called as transverse wave, और parallel direction में जो oscillate करते हैं, that is called as longitudinal wave. So therefore, ये आखिर किस टाइप का wave रहता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं? So in this case, electric field and magnetic field, they are oscillating perpendicular to the direction of propagation. तो फिर किस टाइप का वेव हो जाएगा ये? किस टाइप का वेव हो जाएगा? Perpendicular to the direction of propagation. Transverse wave, exactly. It will be transverse wave. So both of them will be perpendicular to the direction of propagation. Not only that,
they are also perpendicular to each other. मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x एक्सिस में रहा सो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में हो जाएगा, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी परपेंडिकुलर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर रहेगा. सो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field, all three are mutually perpendicular to each other in case of electromagnetic wave. This is what we can see. So this is the basic of electromagnetic wave, right? Now so therefore you can write it down. An electromagnetic wave is a wave. An electromagnetic wave is a wave which propagates as coupled electric and magnetic fields. Coupled electric and magnetic fields. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहते हैं और वो प्रोपागेट होता है. कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कोमा. अच्छा ये किस डायरेक्शन में रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं. डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी परपेंडिकुलर रहते हैं और बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल. सो कोमा देके लिखना ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेटिंग perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave, and to the direction of propagation of the wave. Now we know what is electromagnetic wave. इतना हमें पता चल गया. ये होता कैसे, कहाँ से क्रिएट होता है, like where is it coming from? So write it down. It is radiated by an accelerated charge. By an accelerated charge. It is radiated by an accelerated charge. So देखो, basically what is happening in this case, if you are taking a charge particle, let us say I'm taking a charge particle. Charge particle का तीन तो स्टेट हो सकता है. Either charge particle चुपचाप बैठा हुआ है, that is stationary, or it is in rest. Second case क्या हो सकता है? It is moving. Moving में दो cases और हो सकता है. It is moving with constant velocity and it is moving with a velocity which is not constant. So therefore three cases are there. The charge particle is stationary or rest. Secondly, the charge particle is moving with a constant velocity. Thirdly, the charge particle is not moving with constant velocity. That means some acceleration is there. So the charge particle is having some acceleration. So therefore here you see, here I am taking a charge particle and the charge particle is at rest. When the charge particle is rest, इसके वजह से क्या create होता है? That is implied then we can say that electric field is produced. Electric field is produced. So इसके इर्द गिर्द में electric field will be there. In the vicinity of it, electric field will be there. Second case is the charge particle is there and it is moving with constant velocity. So when it is moving with constant velocity, that is implied that firstly, because it is a charge particle, electric field will be there. Electric field will be there. And because it is moving with constant velocity, उसका मतलब क्या है? Charge move कर रहा है. Charge move करने से क्या generate होता है? Current generate होता है. और current का दो effect रहता है. एक electric effect, एक magnetic effect. So whenever current is there in the vicinity of it, magnetic field will be there. मतलब whenever charge is moving, then in the vicinity of it, magnetic field will be there. So therefore, whenever a charge particle is moving, electric field and magnetic field both are produced. Right? Electric field and magnetic field both are produced. Now, in the third case, this is the first case, this is the second case, this is the third case. In the third case, the charge particle is accelerating. Accelerating का क्या मतलब है? It is changing the velocity. If it is changing the velocity, magnetic field is getting changed. If the magnetic field is getting changed, it will create further electric field, and hence electric field is also changing. So therefore,
accelerating charge creates changing electric field and magnetic field. Changing electric field and magnetic field. And this changing electric field and magnetic field, because of this changing electric field and magnetic field, energy gets transferred. So therefore, this is called as electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. The way how it is moving, that is called as electromagnetic wave. EM wave. Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुछ हैवी तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा होगा बट उतना भी ज्यादा नहीं होगा, छोटा सा चैप्टर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, नाउ अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ने से पहले हम लोग जानना चाहते हैं, लेट्स नो दैट हाउ इट इज क्रिएटेड. आखिर लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला? Yes or no? So in the beginning, Maxwell predicted that there can be electromagnetic wave. Prediction was done by the electromagnetic wave. Now production and detection was done by Hertz. So therefore here you can write it down. एक स्टार मार्क देके लिख लो. Initially Maxwell predicted. Initially Maxwell, Maxwell. Initially Maxwell predicted the existence of electromagnetic wave. The existence of electromagnetic wave. Later on, Hertz, Hertz, Hertz created and detected electromagnetic wave. Hertz created and detected electromagnetic wave. Okay, is that clear? Okay, so let's move ahead. That how Hertz created and detected electromagnetic wave. कैसे उसने detect कर लिया? So अभी तक हमारे लिए क्या क्या important है? हमारे लिए ये जो terms जो मैंने बताया, ये सारे के सारे terms important है. Amplitude, time period, frequency, angular frequency, wavelength, propagation constant, velocity, क्या ये सारा का सारा equation important है. और and most important is the equation. Thereafter we know some basics. Okay, so now let's move to the Hertz experiment. So you just understand the concept first of all. Thereafter, I'll dictate the whole thing. That what is happening. इस केस में क्या किया जाता है? Initially हमारा एक high tension coil दिया जाता है. और एक coil का क्या रहता है? Coil is having inductance. पढ़े थे ना 6th chapter में inductance. Now the two ends. So on the upper side, one plate is kept. It could be circular, it could be rectangular. No problem. So upper side में एक plate रखा जाता है. नीचे साइड में सिमिलर ही एक प्लेट रखा जाता है. The lower portion, one more plate is there. Now let's consider. Here I am taking. इसके नीचे वाले पोर्शन से मैं एक मेटल को लेके एक मेटालिक बॉब को रख रहा, एक मोटा सा. यहां से भी नीचे वाले पोर्शन से कनेक्ट करके एक मेटालिक बॉब को मैं यहाँ पे लाके रख दिया. Right, and this portion is connected to this one, and this portion is connected to this one. Right. So in the first case, what I'm going to do, यहाँ पे मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, and I'm connecting it to a switch. Let us say this is the key. Key को मैंने बंद कर दिया. Key को बंद करने से immediately क्या होगा बताओ?
immediately key को बंद कर दिया, I just switched on the key, what will happen? अरे current flow होगा immediately, yes or no? So immediately there will be current will start flowing through the coil, and immediately whenever current starts increasing in the coil, what happens? No one? जैसे immediately current होगा, there will be EMF will be induced according to the Faraday's law. अच्छा Faraday's law तो flux के हिसाब से बोलता है? No, whenever current is flowing in this coil, in the center magnetic field will be created, and immediately there is change in magnetic field, and because of the magnetic field, magnetic flux will be changed. Because of the magnetic flux, EMF will be induced. Yes or no? यहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा ये कॉइल के चारों तरफ, ये कॉइल के दोनों एंड में, और एंड द इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज वेरी हाई टेंशन कॉइल, दिस वन हाई टेंशन कॉइल। तो फिर EMF जो इंड्यूस होता है, EMF का वैल्यू क्या रहता है? EMF का हमारा नॉर्मल फॉर्मूला आ जाएगा दैट द EMF E will be equal to, ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, E is equal to L di by dt, L di by dt। मान लो कि L का वैल्यू 1000 हेनरी हो गया, 1000 हेनरी, तो फिर ये अगर छोटा सा भी चेंज हुआ, then the EMF will be 1000 times. Can you think of कितना हाई वोल्टेज हो सकता है? It will be very high. So if the rate of change of current is very high, the EMF induced will be very high. And if the EMF induced is very high, मतलब ये दोनों टर्म पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो गया। So now you see these two are connected to this two, इन दोनों के पॉइंट में कनेक्टेड है। So that means these 2 points, these 2 bobs will be having a strong potential difference, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इमीडिएटली वहां पे करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा। इट विल ब्रेक डाउन द डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द, सो therefore there will be dielectric breakdown in the region। ये छोटा सा रीजन में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से क्या होता है? इमीडिएटली देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द अपर टू लोअर। करंट जैसे ही फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एंड देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रख देने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी देयर, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी देयर, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होने जा रहा है? Am I connected or not? Yes, I'm connected. So therefore, whenever there is accelerating charged particle, immediately there is production of electromagnetic wave. So therefore, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाने लगेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चारों दिशा में प्रोड्यूस हो जाएंगे, they will be created। Yes or no? So electromagnetic wave will be created। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ है? Yes or no? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें सिंपल ये करना है, देखो दूसरे साइड में थोड़ा सा दूरी पे ऐसे करके एक रिंग ले लेंगे, रिंग का भी 2 बॉब होगा, 2 bobs will be there, and we can connect, of course we can connect the galvanometer at here, no problem in that one, right? नहीं connect करने से भी कोई problem नहीं है। So whenever electromagnetic wave is created at this point because of the spark generated at this point, इस point में spark जो generate हुआ है उसकी वजह से जो electromagnetic wave जो create हुआ वो तो चारों दिशा में जाएगा ना। So when it is propagating in all the direction, it is reaching at this point as well, and it is having a electric field, right? Electromagnetic wave means electric field, and because of that electric field, the charges, the electrons at this place, they will also be started moving. They will also experience a force, and because of that force, they will start moving. They will be started accelerating, and once they are started accelerating, यहाँ पे भी एक spark दिखाई देगा. Immediately you can see a spark. Now, okay, fine. That here there is spark, ठीक है, हमने मान लिए because of this battery, but why there is spark, the flow of electron at this point? कुछ तो electric field है ना? So therefore here we are understanding that some electric field is being transferred to this point, because of which electron is traveling. Similarly हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक coil को रख सकते हैं, एक coil को रख के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। So therefore whatever is transferring the energy, it is having both electric field and magnetic field, and it is transferring the energy. What does that means? That means an electromagnetic wave is being created at here, and it is being transferred, or it is propagating in all the direction. This we can understand.
Yes or no? Is this point is clear to all of you? So these two are basically metal plates. These two are basically metal plates. फिर तुम लोग बोलोगे मेटल प्लेट्स का क्या काम है? किसी का कुछ डाउट नहीं याद है? नहीं याद है? लास्ट में जो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है उसमें समझ वो थोड़ा समझ में नहीं आया. See, if spark is being generated, that means some work is being done. करंट हो रहा है. करंट हो रहा है कि क्या मतलब है? कहीं से तो एनर्जी आ रहा है ना. एनर्जी आया कहाँ से? Whenever we switched it on, then only I see it. जब मैं ऑफ कर दूंगा तभी मैं देखूंगा. सो बेसिकली जब मैं ऑन कर दूंगा मुझे मोमेंटरीली यहाँ पे स्पार्क दिखाई देगा. मोमेंटरीली मुझे यहाँ पे स्पार्क दिखाई देगा और फिर बंद हो जाएगा. फिर मैं जब इसको ऑफ कर दूंगा देन आई कैन सी द मोमेंटरी स्पार्क. देन आई कैन सी द मोमेंटरी स्पार्क. सो देयरफॉर मैं अगर इसका करंट को हाईली चेंज करता रह रहा हूं देन आई कैन सी द स्पार्क हियर अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड. अगर एक बार किया तो एक बार क्रिएट हो गया, छूट गया उसके बाद. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है? एसी सप्लाई होता है. एसी सप्लाई से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्स्टेंटली जनरेट होती है. अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है. And energy is being transferred. We can understand that one because current is being flown in this loop. So current flow हो रहा है का मतलब क्या है? Energy कहीं से तो आ रहा है ना, otherwise work done कहाँ से हुआ? Yes or no? So therefore it is coming from this one and it is an electromagnetic wave. We can understand it from these two experiments. Yes or no? तुम्हारे बुक में बस यही दिया हुआ है. So these two are basically metal plates. This is high tension coil or induction coil. You can write it down. So this is the induction coil. इंडक्शन कॉइल इसका L रहेगा और ये दोनों प्लेट के बीच में, दो प्लेट को पैरेलल रखने से क्या आता है दोनों के बीच में? हाँ, कैपेसिटेंस. सिंपल. ये दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस रहेगा. So therefore इस केस में हम एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को देख सकते हैं. And whatever electromagnetic wave we are seeing, उसका एक प्रॉपर्टी रहता है. It will be having a frequency, and that frequency of that electromagnetic wave it depends upon this inductance and this capacitance. This capacitance. So therefore उसका frequency कितना हो जाता है? उसका frequency F is equals to, और here you can see that omega will be equals to, angular frequency omega will be equals to 1 by under root of L into C. Omega का formula क्या रहता है? 2 pi by T. That can also be written as 2 pi into F. So that is implied then F will be equals to 1 divided by 2 pi into under root of LC. So therefore frequency of this electromagnetic wave it depends upon the high tension inductance and this capacitance. इसके ऊपर ये depend करता है, right? High tension coil इसीलिए लिया जाता है so that spark can be produced. So is this clear? डिक्टेट करवाना स्टार्ट कर दो या फिर ये डायग्राम को ड्रॉ कर दो? इसको मत लिखना, इसको फिलहाल के लिए मत लिखो, डायग्राम को ड्रॉ कर दो. So this is basically transmitter coil. ये पूरा का पूरा ट्रांसमीटर होता है which is transmitting electromagnetic wave and this is the detector. So therefore मैं green color में लिख ले रहा हूँ. This is the detector and this whole system is called as transmitter because it is transmitting electromagnetic wave. So लिख लो, उसके बाद मैं डिक्टेट कर देता हूँ. इनका हम नाम दे देते हैं. सो इन दोनों का नाम दे देते हैं एक्स वाई. इन दोनों का नाम दे देते हैं प्लेट्स P1 P2 या फिर इनका नाम दे देते हैं B1 B2 बॉक्स B1 B2
and this is the high tension coil or induction coil, and this is the detector coil. Okay, is the drawing is done? Yes, sir. Yes, sir. So write it down. When sudden change in induction, when sudden change of current in induction coil happens, matlab whenever we are switching on the key, and sudden change of current in induction coil happens, a strong potential difference is created across the induction coil. A strong potential difference is created across the induction coil. According to the Faraday's law, ये हम जानते हैं. This potential difference also appears across the balls, BOPS. ये दोनों metal balls है ना? Appears across the metal balls, लिख लो. Metal balls. These two are metal balls. Metal balls. This strong voltage across the metal balls, creates dielectric breakdown in between them. Because of small separation, creates dielectric breakdown in the space between them because of small separation. अभी देखो, जितना भी हमने यहाँ पे करंट चेंज किए di/dt, उसके साथ L मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज इक्वल टू V. सेम पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों मेटल बॉल्स की अक्रॉस आ जाएगा. अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड नाउ द सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी लो. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D. अगर D अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो जब ये एक लिमिट के बाहर हो जाता है, इट बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्रिएट करता है. मतलब जो स्पेस रहता है दैट इज नो मोर ए डाइलेक्ट्रिक, नो मोर ए इंसुलेटर, दैट बिकम्स ए स्ट्रांग कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंडक्टेड इन दिस पाथ. सो मैंने कहां तक बताया था? मैंने कहां तक बताया था, डिक्टेट किया था? Because of small separation. Between them, ना? हाँ, okay. Dielectric breakdown हो गया. हाँ, so write down. Because of this dielectric breakdown, electron spark is created. Which causes production of electromagnetic wave. Electron spark is created, which causes the production of electromagnetic wave. This produced electromagnetic wave can be detected. This
produced electromagnetic wave can be detected if a detector coil is properly placed. If a detector coil is properly placed. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिख लो, angular frequency of the created electromagnetic wave depends on inductance of the induction coil, and capacitance between the metal plates, metal plates के वहां पे लिख लो P1 P2, और जहां पे मेटालिक बॉल्स लिखे हो ना वहां पे P1 P2 लिखो. The things will be easier for all of you. The angular frequency of the produced electromagnetic wave depends on inductance of the induction coil, bracket में लिख लो L, and the capacitance between the metal plates, bracket में लिख लो C. The relation is given as omega is equal to 1 by 2 pi into under root of LC. One by 2 pi into under root of LC. That is implied in frequency of the electromagnetic wave is F is equal to 1 by 2 pi into under root of LC. 1 by 2 pi into under root of LC. So this is how electromagnetic wave was produced and was detected by Hertz. And because he gave the frequency formula, इसीलिए इसी के नाम पे हमारा यूनिट बताया जाता है that this frequency is unit, SI unit will be Hertz. वहीं से आता है इसका concept, right? Next one. So okay, electromagnetic wave कैसे प्रोड्यूस हुआ था, कैसे डिटेक्ट हुआ था, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन और डिटेल्स में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? So let's go and study in more details about the electromagnetic waves. So we can write it down that mathematical representation of electromagnetic wave. Mathematical representation of electromagnetic wave. So here you just write it down. Let us consider an electromagnetic wave. An electromagnetic wave is propagating along x-axis. x-axis. तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे? We know that just like our water particles, they were oscillating perpendicular to the direction of propagation of disturbance or direction of propagation of wave. हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे. So therefore here we can write down. कहाँ तक लिखवाया मैंने? Let us consider it. Electromagnetic wave is moving along the x-axis,
and its electric field and magnetic field, its electric field and magnetic field components are oscillating along y-axis and z-axis. Are oscillating along y-axis, mat likho. Are oscillating mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. So यहाँ पे इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, वो डायग्राम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. So let us consider this is the x-axis in which our wave is propagating. ये x-axis है. So x-axis अगर ये है, y-axis, z-axis भी यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं. So this will be the y-axis and this will be the z-axis. Z-axis. So let us consider wave is propagating in x-axis. इस direction में wave propagate हो रहा है. Wave is basically in our normal language it is moving. So definitely electric field is oscillating perpendicular to the wave motion. Wave का motion किस direction में? Wave का motion उसका velocity इस direction में. So wave motion is in this direction. So definitely electric field is oscillating perpendicular to this direction. So let us consider electric field is oscillating about xy plane. अच्छे से ड्रॉ करना ताकि तुम लोगों को डायग्राम समझ में आएगा. So is it clear to all of you that electric field is oscillating perpendicular to the direction of propagation of wave motion? So that means electric field इस direction में maximum होता है, फिर zero होता है, फिर minimum होता है, फिर zero होता है, इसी तरह से oscillate कर रहा है electric field, right? And then magnetic field is oscillating perpendicular to both propagation of wave and the electric field as well. तो फिर बताओ, here electric field is in the y and x plane, xy plane में electric field है. तो फिर बताओ magnetic field किस plane में रहेगा? सोचो सोचो. It will be perpendicular to the direction of propagation of wave and it will also be perpendicular to the electric field. So definitely ये z axis में रहेगा, z axis और x axis के about, so that means zx plane में रहेगा, right? So therefore here you see magnetic field will oscillate in this direction. Please use color pen, otherwise things will be difficult. So therefore यहाँ पे मैं diagram draw कर सकता हूँ that electric field is oscillating about this axis. Electric field ऐसे oscillate कर रहा है and hence I can say that magnetic field is oscillating like this. Magnetic field ऐसे करके oscillate कर रहा है. And then you can complete the for other cycle as well. ये मैंने एक cycle के लिए draw किया, you can complete it, no problem. So definitely electric field will be having a peak value. Let us consider that peak value is E naught. Magnetic field will having a peak value. Let us consider that peak value is B naught. Peak value, that is the amplitude B naught. So that is implied then electric field will is having the wave motion, wave type का motion है, electric field का भी, magnetic field का भी wave type का motion है. तो फिर दोनों का equation कैसा हो जाएगा? Electric field is along the y axis. So electric field is along the y axis. So we can write it down.
All of you just write down, draw this diagram. Did you all draw this diagram? Is it completed? Yes, sir. ओके, कलर पेन का यूज करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है, डायग्राम पूरा हौच-पौच हो जाएगा। फिर सोचेंगे अरे मैंने क्या ड्रॉ किया था, क्या हो गया, सोचे कुछ थे बन गया कुछ और। ओके, नाउ हियर यू सी, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेव टाइप का मोशन फॉलो कर रहा है ना, तो इसका भी वेव का एक इक्वेशन बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेव टाइप का कुछ एक फॉलो कर रहा है, इसका भी एक इक्वेशन बनेगा। सो लेट्स राइट डाउन equation for electric field. Equation for electric field. This will be electric field is along किस direction में है? Electric field along the y. So therefore it will be y. That will be equals to इसका peak value is E naught. देखो हमारा normal wave equation देखो तो you must have written what is the normal wave equation. Normal wave equation is y is equals to a naught into sin kx minus omega t. So इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ey, पिक वैल्यू है e naught into sin का एक टर्म आ जाएगा, it will be sin kx, k into x minus omega into t. This is the electric field. या फिर e भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, e is equals to e naught sin kx minus omega t, बस y एक्सिस में है ये। Similarly, what about the magnetic field? Equation for magnetic field. Equation for magnetic field. What we can write it down? We can write it down that magnetic field B will be equals to, this is basically along the z axis, this will be equals to B naught sin kx minus omega t. अच्छा मैंने दोनों का क्यों kx minus omega t लिखा है? Because here you see, although both of them are in different direction, both of them are in same phase. दोनों एक ही साथ जीरो हैं, दोनों एक ही साथ मैक्सिमम है, दोनों एक ही साथ जीरो हैं, दोनों एक ही साथ मिनिमम है, दोनों एक ही साथ मैक्सिमम जीरो उनका एक ही साथ हो रहा है। That means I had told you, एक ही साथ उठना एक ही साथ बैठना मतलब they are in same phase. So therefore because they are in same phase, इसलिए साइन का टर्म भी सेम ही आ रहा है इन दोनों का। And this is the equation for electric field, and this is the equation for magnetic field. This is what we are getting, right? Thereafter we can write down some properties. कुछ चीजें हम इसके बारे में लिख सकते हैं. You can write it down that. Make a star mark and write it down. When it was found out, Maxwell actually predicted that whenever electromagnetic wave is moving, the speed of the electromagnetic wave is equals to speed of the electromagnetic wave v is equals to, वो होता है कि इसका स्पेस में जो रहता है इसका वैल्यू रहता है 1 by mu naught into epsilon naught. Epsilon naught is permittivity of free space, mu naught is permeability of free space, epsilon naught mu naught. So therefore इसको मैं लिख पाऊंगा, पहले समझ लो. v is equals to, उसने बोला this is equals to 1 by under root of epsilon naught into mu naught, या फिर mu naught into epsilon naught, कुछ भी लिख सकते हो. अभी what is the value of epsilon naught? Who can tell me? 8.85 into 10 to the power minus 12. Yes. And what is the value of mu naught? 10 to the power minus 7. नहीं. 4 pi into 10 to the power. Exactly, 4 pi into 10 to the power minus 7. So mu naught का वैल्यू पुट कर लो इस केस में और epsilon naught का वैल्यू पुट कर लो इस केस में. देखना इसका वैल्यू जो आ जाता है it is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? ये कौन सा स्टैंडर्ड कुछ एक वैल्यू है ना ये? What is this one? होता क्या है ये? Speed of light. Speed of light, exactly. So therefore Maxwell predicted that
the speed of the electromagnetic wave in air or free space, it is equals to 1 by under root of mu naught into epsilon naught, that is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. फिर लोग बोलने लगे कि अरे ये तो स्पीड ऑफ द लाइट है, और लाइट का स्पीड से किसी का भी स्पीड उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये हमारा थ्योरी कहता है. Then Maxwell said that yes, so therefore electromagnetic wave also moves with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second, and conversely it can be said that light is an electromagnetic wave. यहाँ से पता चलता है. So how we can know that light is an electromagnetic wave? That is because its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. वही से हमें पता चलता है. So therefore write it down. Electromagnetic wave moves. Electromagnetic wave moves in vacuum or air. In vacuum or air, with the speed of light. With the speed of light. So this is basically c. This is basically c. So therefore here he predicted that इसको v को हटा के उसने c कर दिया. c is equal to 1 by under root of mu naught epsilon naught, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. अच्छा, ये वैक्यूम या एयर में होगा. अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो पानी कर दिया, वाटर, बेंजीन, ग्लास, I changed it, kerosene, petrol. Then what will happen to the speed of light? Yes, write it down. For other medium, speed of light is basically v is equals to 1 by, इस केस में क्या हो रहा है देखो, 1 by square root of permeability of free space into what is this one, permittivity of free space. Permeability of free space into permittivity of free space, square root of. तो जब हम दूसरे मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, permeability of that medium into permittivity of that medium. खत्म. This will be the speed of the light in other medium. खत्म. This is what we can understand. Other than that, और भी एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि yes, both of them are simultaneously zero, simultaneously peak, simultaneously zero, simultaneously draw में जाता है. So therefore, is there any relation between E naught and B naught? That is the main question. कि क्या इन दोनों में कोई एक रिलेशन रहता है? Yes, there is a relation between E naught and B naught. It says that, एक और स्टार मार्क देके लिख लो. The magnitudes of electric field and magnetic field are related as, the magnitude of electric field and magnetic field are related as C is equal to E divided by B. C is equal to E divided by B. So इसको अनबॉक्स कर दो. So that is implied then. E का फॉर्मूला क्या आता है? E का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. E is equal to E naught sin kx minus omega t. B is equal to B naught sin kx minus omega t. उसका फॉर्मूला पुट कर दो तो. So that will be equal to E naught sin kx minus omega t divided by B naught sin kx minus omega t. Yes or no? So यहाँ पे sin kx minus omega t, sin kx minus omega t, they are getting cancelled. So what is left? What is left is E naught by B naught. So that will also be equal to E naught divided by B naught. Yes or no? And just now we have studied that C is equal to under root of, 1 by under root of epsilon naught into E naught. So this will be equal to 1 by under root of epsilon naught into mu naught. So ये है एक ही फॉर्मूला, एक ही जनरल फॉर्मूला जिसको कि यूज करके बहुत कुछ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया. मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड B नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय C डायरेक्टली. मान लो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा हुआ है, क्या करोगे? B नॉट इंटू C. मान लो तुम्हें कोई एक मीडियम का ये दोनों दिया हुआ है और बाकी कुछ मांगा हुआ है. हाउ यू कैन गेट इट? यू कैन गेट द स्पीड ऑफ द लाइट. Yes or no? Yes, you can get it.
So these are the basics. इसके ऊपर हम कल के क्लास में और भी कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और बाकी भी और भी डिटेल्स में मैं बताऊंगा. But for the timing, I'm having the recording of this video, so I'm just ending it here. Whoever wants this video, I can share it. So stop.